So what did he find regarding the dominance of traits? ठीक है. So when Mendel interbred pea plants with red flowers and pea plants with white flowers, तो एक parent red flowers के साथ था और एक parent white flowers के साथ था, he obtained plants with red flowers and the white did not show up. So he concluded basically that the redness of the flower is the dominant trait. ठीक है ना, मतलब अगर रेड वाला ट्रेट वाइट की प्रेजेंस में वहां पे होगा तो वाइट वाला अपने अफेक्ट्स नहीं दिखाएगा एंड देयर फॉर वाइट इज द रिसेसिव ट्रेट. He further studied all the seven different characters and came to know that all of them behaved this way. तो उनमें से कोई एक रिसेसिव था और एक डोमिनेंट था. One of each pair of contrasting traits appeared to be dominant and the other appeared to be recessive. Like for example, color of flower, red was dominant and white was recessive. इसी तरह से color of pod, green was dominant and yellow was recessive. Position of flower, axillary positions were more dominant compared to terminal positions, right? So, if we apply this to humans, how can we explain the traits like color or height in humans? तो humans में ये process थोड़ा सा फर्क होता है because it's not just one character that is involved in these characteristics for humans. Humans में multiple characters involved होते हैं जो कि similar amount of um, dominance या complete dominance show करते हैं. So Mendel did not stop over here. He went on to basically perform experiments where he basically carried out different breeding experiments. So he self-fertilized a true breeding variety. True breeding matlab homozygous, ठीक है ना? And what he got was all of the offspring were exactly identical to the parents, ठीक है? Then he cross-fertilized true breeding plants that differ in one trait only. मतलब एक पेरेंट जो है was homozygous for one trait, homozygous dominant for one trait, ठीक है ना? And the second parent was homozygous recessive for one trait. Let's say कि the trait was the shape of the seed, ठीक है? So all of the offspring were round seeded, मतलब जो parents dominant थे round seed वाले, ऑफस्प्रिंग उन जैसे ही निकले, ठीक है. देन ही डिड सेल्फ fertilization of the F1 generation. So what is the F1 generation? F1 generation is what we got here. Step 2 में जो हमारे offspring थे, that is the F1 generation. And then he self fertilized the F1 generation वाले seeds. And his result was basically the F2 generation, ठीक है ना? तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F1 से हमें F2 जनरेशन मिली एंड 3/4 ऑफ द F2 जनरेशन हैड राउंड सीड्स. देन ही डिड सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F2 जनरेशन, ठीक है? एंड 1/3 ऑफ द, यहाँ पे F2 लिखा हुआ है, ये बेसिकली F3 होना चाहिए. 1/3 ऑफ द F3 राउंड produced only round. So only 1/3 of them were round. एंड इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट स्लाइड, हमने लास्ट स्लाइड पे पढ़ा था कि F2 में 3/4 ऑफ द F2 जनरेशन हैड राउंड सीड्स एंड 1/4 हैड wrinkled सीड्स. एंड यहाँ पे 1/3 ऑफ द F2 सीड्स प्रोड्यूस्ड, F2 नहीं होना चाहिए, F3 होना चाहिए, प्रोड्यूस्ड ओनली राउंड. एंड 2/3 ऑफ द F3 प्रोड्यूस्ड बोथ राउंड एंड wrinkled in 3:1 रेशियो, राइट? सो मूविंग ऑन, यहाँ से इसको इंटरप्रिटेशंस जो मिली वो बेसिकली ये थी. So the interpretations were basically कि there are particular hereditary factors that determine the contrasting form or trait. ठीक है ना? These factors carry hereditary information which is transmitted to the offspring, and each pea plant has a pair of these factors, one from the mother and the other from the father. And both of these hereditary factors control the expression of the trait. एंड ही बेसिकली डिनोटेड दैट जो डोमिनेंट फैक्टर है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होगा और रिसेसिव वाला स्मॉल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होगा. फॉर एग्जांपल, आर फॉर राउंड सीडेड, कैपिटल आर, एंड रिंकल्ड फॉर स्मॉल आर फॉर रिंकल्ड सीड्स, ठीक है. द ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड प्लांट हैज़ आर एलील्स, मतलब कैपिटल वंस, एंड द ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड प्लांट हैज़ small r alleles, ठीक है ना? So when both alleles of a gene pair are same, the plant is said to be homozygous.
And basically, the conclusion here is that during gamete formation, the allele pair gets separated from each other, and in this way, gametes get only one allele for each trait. Half the gametes got one allele, and the other half got the other allele. And fertilization occurs at random. That's why आपके पास एक variation आती है आपके offsprings में. And the male gamete carrying the R fertilized with the female gamete carrying small r wala. The offspring obtained were capital R, small r, and since capital R is dominant, all of the offspring will be round seeded, and the plant is heterozygous, round seeded, but phenotypically it will only show the round trait.